look at you and it's easy to see. Hello students of class 6th. How are you all? Hope you all will be fine. Okay. So students, this is your Farat ma'am who welcomes you all in your English class. Children, today we are going to start the first chapter of NCERT book. Alright? Yes. And that is your Honeysuckle. Fine? And the name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? Okay. First chapter of NCERT book Honeysuckle, and that is your Who Did Patrick's Homework? Alright? Okay. Children, this video is going to be the first part, and in the next part we will discuss the exercises. Alright? Okay. So at first, let me ask you from you all that what do you understand by the term homework? आप homework से क्या समझते हो? Yeah, in short we can say HW, right? Yes, homework means the work which is done at home. And the other term, that is your classwork, or CW, which means the work which is done in your classroom. Fine? Okay. So here we are going to study about a boy whose name is Patrick. Okay, this story, the main character is Patrick. As you can see the picture here. Yes, is it visible? Yeah. See, there is a boy who is carrying a hockey on his shoulder. Okay, and this boy is Patrick. Fine. यही वो लड़का है जो है Patrick है. Fine. And we are going to study about that boy. See. So come to the first paragraph. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball. Listen, children. I'm reading the paragraph also, so you can also repeat after me. Fine. If your reading section is poor, fine. So that your reading section will be also enhanced. Fine. Okay. For enhancing your reading skill, just try to repeat after me. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. Look at the right side of the page. See, the meanings are given as you can see here. The first word is Nintendo. Okay, word meanings are given. First word is a Nintendo. It means what? It is a video game. All right. Okay, and the next word is ignoramus. It means an ignorant person who lacks education. Okay, the person who is ignoring anything. Okay, and who is lacking in education. And that boy is what? Patrick is what? He is also an ignoramus because he was an ignorant person, and if he was lacking in education also, na, that's why. Fine. Okay, so now come to the explanation of this first chapter. See here, we are talking about this boy, Patrick. You can see the picture. Is it visible? Yeah. Then this boy is what? He didn't do his homework at time. Okay, always what he used to do, that he just ignore it because he was not interested in doing homework. And he was interested in what? He was interested in playing hockey, basketball and Nintendo. All right. Yeah, he used to always play all the time. And every day he was warned by his teachers that do your homework, otherwise what happened, you will not learn anything. But he rarely listens to his teachers. He just ignored his teachers. Fine. Yeah. And sometimes he was also feeling that he was an ignorant person because he was lacking in education. Okay, उसे लगता था कि हाँ मैं क्या हो रहा हूँ कि मैं अपने स्टडी में पीछे हो रहा हूँ. बट ही वॉज आस्किंग हिमसेल्फ दैट बट व्हाट कुड आई डू, मैं क्या करूँ. लगता है ना बच्चे नहीं करते कि अरे वो उनसे वो काम हो सकता है बट वो करते नहीं, लेकिन अपने आप में एक अपने आप को वो बेचारा बना लेंगे. क्या करूँ, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है. He was like that. Okay, because he hated homework and he was interested in games such as hockey, basketball and Nintendo, but he was not interested in doing homework in the study. Fine. Okay, so now come to the next paragraph. Before coming to the next paragraph, let me ask from you all that do you guys do your homework at time or regularly?
Yeah, we should do our homework regularly, na? Yes, because this helps in our study. This is also the part of our study, na? Okay, okay. Those who do their homework regularly, they will comment me down, and those who don't, they will also comment me down. Okay, okay. Now coming to the next paragraph. Then one day he found his cat playing with a little doll, and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll. He at all, but a man of the teeniest size. He had a little old shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." Now, what happened? He was having a cat, okay? In the next paragraph, at first, see the word meaning. See, breeches. Breeches means breeches or short trousers. The writer here spells it for fun to rhyme with the words which. Okay, breeches. यहाँ writer ने क्या किया है? He is matching with the word and he is making a rhyming word. Alright. This is, for example, breeches, witches. In this way. Okay. And here he has used this word for fun. It means what? breeches means short trousers. जो आप लोग आजकल ना फैशन में भी चला है ना, आजकल तो फैशन में चल रखा है, लड़के की लड़कियां पहनती हैं शॉर्ट ट्राउजर्स, राइट? या इन सलवार सूट आल्सो, इन jeans also they used to wear ankle length jeans, ankle length trouser and all. Okay, so here the meaning is what? Short trouser. And the next word is dishcloth, a cloth used for washing dishes. Okay. um, जब हम जब आप देखो, आपने देखा अपने मम्मा को, वो बर्तन वगैरह वॉश करती हैं तो क्या करती है वो, एक वहाँ पर क्या होता है, वो एक स्क्रबर यूज़ करती है, स्क्रब यूज़ करती हैं। तो यहाँ उसको क्या कहा गया है? एक क्लॉथ यहाँ यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ योर डिश क्लॉथ, उसे ही बोला जा रहा है। फाइन। हैम्पर मीन्स अ बास्केट विथ अ लिड। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ द वर्ड हैम्पर ऑफ गिफ्ट, है ना? तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट इकट्ठे करके एक हम बास्केट की तरह यूज़ करते हैं। तो हैम्पर मीन्स अ बास्केट विथ अ लिड मीन्स उसके जिसमें एक लिड लगा रखा हो, ढक्कन लगा रखा हो। Grimaced, scowled, pursed his lips. His face had these expressions showing disgust, anger, and disapproval. Here, these words are used. Grimaced, scowled, pursed his lips. It means what? Here, this word is used to show the expression. Okay, and this expression is of what? That is of disgust, anger, and disapproval. जैसे आप गुस्सा का, अपने किसी चीज़ को आप नहीं मानते हो ना, उसका एक एक्सप्रेशन शो करते हो ना, चाहे सर हिलाकर या फेस का एक्सप्रेशन देते हो इस तरह का गुस्से वाला, तो वह यहाँ पर वही ये इससे बताया जा रहा है। फाइन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ, बिकॉज वी हैव read ना दिस पैराग्राफ. Okay, here the boy whose name is Patrick, he was having a cat. Okay, he found a cat, and then what he saw, that cat was playing with a little doll. He saw that there is a cat, and that cat is playing with a doll. Yes, and he grabbed it away. और उससे लगा ना कि वो जो लिटिल डॉल है वो क्या करता है, उसे छीन लेता है अपनी बिल्ली से. ऑलराइट, he just snatched it from his cat. To his surprise, it was not a doll, but when he snatched it, when he grabbed that little doll, then what he saw, that was not a doll. From the distance, from the far away, he saw that there was a doll, but in reality it was not a doll. Fine. And what was that? Okay, see, as you can see in the picture, there is a boy Patrick, there is a cat, and that little man. Okay, and that there was not a little doll, there was this little man. Fine. Okay, then what he saw, that little doll was not there, and there was a genius sized man. मतलब there was a man who was of short height, as you can see here. एकदम छोटा सा ना, छोटू सा है. Yeah, that was, he had a little wool shirt, and he was wearing a wool shirt, okay, with old fashioned breeches, means बड़ा ही पुराने ज़माने का उसने शॉर्ट ट्राउज़र पहन रखा है, एंड हाई टॉल हैट, और उसने देखो एक टोपी लगा रखा है. येस, दैट हैट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हैट, हु हियर ही इज यूजिंग ना दैट हैट. लेट मी शो यू. See this one. Wait.
This, are you seeing this little man? Yes. And this is his hat, na? ये रहा इसका hat. All right. Okay. And this is your cat. ये cat है. And this is your Patrick. इसे आप शुरू से पढ़ रहे हो, right? Okay, fine. Okay. Now see what happened. And that little man was having what? He was wearing old shirt and he was wearing a old-fashioned short trouser. Okay, breeches में short trouser. And he was having a hat which is a very tall, है ना? उसकी size से ज़्यादा उसका तो hat उसका ऊंचा हो रखा है. Yes, and he was like witches. Okay, and that little man was started crying. Okay, here he yelled. He means what? He refers to little man. Okay, this he refers to little man. Got it? ये मत समझना कि यहाँ पैट्रिक के बारे में बात हो रही है. ही किसके लिए यूज़ किया गया? लिटिल मैन के लिए. एंड ही स्टार्टेड crying. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." उसने क्या चिल्लाया कर बोला कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे वापस फिर से मत दो कैट को. Don't give me to the cat because the cat will what the cat will do? He will just kill me. Okay, so just save me from that cat, and in return of that, what I will do? I will fulfill your wish. Okay, and I promise you. He was promising also. Okay, and then see here what happened. The little man was uh, he pleased Patrick to save him. Okay, he pleads Patrick to save him, and from whom? From the cat. वो किससे बचाने को कहता है पैट्रिक को? एक कैट से ना. Yes, and return what he said, and in return he promises to grant a wish. उसने रिटर्न में क्या कहा था? मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा. And it seems to be good opportunity for Patrick, na? Yes, if someone is saying that I will fulfill your wish, then you will be also happy. You will be also thinking that, oh, it's a good opportunity for me. Even I will also think of it. I will also feel like that. Oh, wow. It will be like, wow, it is a good opportunity. काश हमारे साथ भी ऐसा होता. कोई हमसे आकर हमारी विश पूछता, राइट? लगता है ना ऐसा कुछ जादू वाला होता. आप लोगों को लगता है कि नहीं? वो अलादीन का चिराग वाला सुना है कहानी? लगता नहीं कि हमारे पास भी जिन होता, हम भी एक वो अलादीन के चिराग को रब करते हैं एंड देन जिन हाजिर होता. बन जिन हाजिर है, आपको जो मांगना है मांग ले. इस तरह को नहीं दिखाता है फिल्मों में एंड वो प्रोग्राम्स में. तो फील होता नहीं काश हमारे लाइफ में ऐसा सचमुच का होता. मैं तो बचपन में बड़ा सोचती थी भाई. मुझे ना बचपन में ना ये सारे ना इमेजिनरी वर्ल्ड बहुत पसंद थे. इवन मैं ना दिन में भी ऐसे ही बैठे बैठे सोचती रहती थी, इमेजिनेशन में रहती थी इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में ना. मतलब ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश मेरे पास भी वो चिराग होता, मैं उसे रब करती और जिन हाजिर होता. इट वॉज लाइक दैट. एंड व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड ना, देन देयर वाज अ प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन, शाकालाका बूम बूम. हैव यू सीन देम? आपने नाम सुना होगा. आप लोगों के टाइम में तो वो प्रोग्राम नहीं रहा, हमारे टाइम में था शाकालाका बूम बूम. And that was a magical program. मतलब that program was based on the magic. Okay, magic pencil. There was a pencil who was which was magic pencil. और उसको देखकर ना मैं पता क्या सोचती थी, काश मेरे पास भी ऐसा पेंसिल आ जाता. इवन ना मार्केट में भी पेंसिल मिलने लगे थे, लंबे लंबे पेंसिल. ठीक है, वो वाली. बट मैं सोचती थी इसमें मैजिक क्यों नहीं होता? काश में मैजिक होता. इट आई वॉज लाइक, कैसे बताऊँ, अपने एक्सप्रेशन शो करूँ आपको. मैं ऐसी थी. दैट वॉज माई चाइल्डहुड, दैट्स वाई. मैं छोटी थी उस वक्त. ओके, सो हेयर पैट्रिक वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. ओके, सो ही आस्क्ड दैट लिटिल मैन टू डू हिज होमवर्क इन रिटर्न. और वो इस विश में क्या मांगता है कि यू हैव टू डू माई होमवर्क. फाइन. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टैंजा. See, Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's." And then what? Here, the Patrick is dealing with that little man, and at first he was
he felt that, oh my god, it's unbelievable that he was thinking that how lucky I am that I have got such an opportunity. Okay, and and what he was thinking that it is the answer of my all the problems. So he said to that little man that उसने क्या कहा उस छोटू से आदमी से, only if you do all my homework, मैं तुम्हारी बात बात कब मानूंगा, जब तुम मेरी क्या करोगी, कौन सी प्रॉमिस पूरी करोगे. यू हैव टू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. इट मीन्स जो सेशन है वो एंड होने वाला है, उस तक तुम्हें क्या करना है, मेरी होमवर्क को करना है. ओके, एंड देर वॉज 35 days रिमेनिंग. उस वक्त देर वर 35 days रिमेनिंग, मतलब जो उसकी एग्ज़ाम होने वाले थे उसके 35 days पहले से ही छोटू सा आदमी मिला था. फाइन. ओके, एंड देन पैट्रिक ने उसे क्या कहा, छोटू से मैन को, छोटू से आदमी को, छोटू सा आदमी, मैं उसे भी बोल रही हूँ. या what he said to that little man that अगर if you do a good enough job, it means if you do well, then what I will do, I could even get A's. अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम मेरा काम करोगे अच्छा से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा. इट मीन्स यू हैव टू डू इन दैट वे. इस तरह से करना है कि मुझे ए मिल जाए एग्जाम में. ओके, ही वॉज जस्ट डीलिंग विद दैट लिटिल मैन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. देखो here, see here the words are used, dishcloth, hamper. Fine, okay. And when that little man heard that he has to do his homework, then what was his expression? His expression was like someone has thrown dishcloth in the hamper. Okay, and he kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. It means he didn't, that little man didn't like that job, didn't like that promise, you can say. उसे वो promise पसंद नहीं आया था, उसे वो पैट्रिक का दिया गया जो वर्क था वो उसे पसंद नहीं आया था, because he didn't knew about the study, that's why. Okay, yeah. So he just showed his expression. Okay, and then what he said, oh, I am cursed. गुस्से में नहीं बोलते लोग अपने मन में मन, इसने मुझे ऐसा काम दे दिया. It was like that. मैं एक्सप्रेशन के साथ बता रही हूँ. Okay, so in this way he said, it means little man said, but there was not any option with him and he has to do it. So what he said, but I will do it. कोई नहीं, मुझे तो करना पड़ेगा. Okay, okay. Now coming to the next paragraph. And in the next page also, page number 9. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. See, again, some words are given at the right side. Glitch, an informal word. This is an informal word which means a fault in a machine that prevents it from working properly. Here hitch or problem, मतलब कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना, कुछ उसमें चाहे तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि उसका मशीन का ठीक से चलना, प्रॉपरली वो चल नहीं रहा हो, रुक रुक कर चल रहा हो, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे हम ग्लिच करते हैं. फाइन, ओके. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज श्रिक्ड. इट मीन्स गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मतलब कि ज़ोर से चिल्लाना थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ा सा चिल्लाना, बहुत ज़ोर का. ओके, फाइन. Now see here the word elf. There is a word elf. It refers to little man. Okay, it refers to little man. ये छोटू से आदमी के लिए यूज़ किया गया है. फाइन, लिटिल मैन के लिए एल्फ बोला गया है. ओके, मतलब इट मीन्स एल्फ मीन्स अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन. ओके, in Hindi you can say bahuna. You must have heard that word. Okay, dwarf. Okay, now see, then in this paragraph, see, now I will explain this paragraph. What happened, that elf, it means that short-headed person, that little man had to, what, he has to fulfill his words, because he promised him na, he promised to Patrick that he will do whatever he will say. Okay, so now he has to fulfill his promise. So he started doing Patrick's homework. Okay, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. And
earlier I said na that he was not interested. He was not familiar with the homework, with the study. That little man was not familiar with the study, so he was facing some problems in doing homework. Okay, उसे problems आ रहे थे homework करने में. Then again and again, then it means he was taking again and again help from the Patrick. He was always asking help from the Patrick. और कोई आपसे बार बार आपसे कुछ बोलेगा तो आपको लगेगा नहीं, जो मैं दूसरे से करवा, मैं तुम्हें बार बार बताऊंगा, उससे मैं खुद ना कर लूँ. होती है ना गुस्से वाली वो एक्सप्रेशन. तो ये बार बार उससे हेल्प मांग रहा था जो लिटिल मैन है. ओके, पैट्रिक से. और पैट्रिक को हेल्प करना ही पड़ रहा था. अगर नहीं करेगा तो फिर वो कर नहीं पाएगा. फिर उससे लग रहा था मेरा काम जो है वो पेंडिंग पर रह जाएगा. एंड हियर टू डू इट, एंड हियर टू हेल्प दैट लिटिल मैन. ओके, I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. उसने क्या कहा, जो लिटिल मैन था उसने क्या कहा, छोटू आदमी ने क्या कहा कि जब उसने उसका होमवर्क पढ़ा ना तो जोर से चिल्ला रहा, मुझे इसका मीनिंग नहीं आता है, पता नहीं क्या लिख रखा है इसमें, आई डोंट नो इट्स मीनिंग. ओके, तो then what Patrick said that go and bring a dictionary, take my dictionary and then search that word. डिक्शनरी लेकर उस वर्ड को सर्च करो एंड देन डू इट. बट उसने क्या किया, नो मुझसे नहीं होगा ये चीज़, तुम मुझे बताओ. मतलब पैट्रिक का इन्वॉल्वमेंट चाहिए था उसे. आप एक चीज़ देख रहे हो, इनडायरेक्टली वो पैट्रिक को भी पढ़ने पर मजबूर कर रहा है. जैसे अगर आप किसी को कुछ बताओगे, हेल्प करोगे, तो इसी बहाने आप भी तो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आप भी तो पढ़ रहे हो, अभी तो सीख रहे हो ना. तो इन दिस वे पैट्रिक वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व. जो एकदम नहीं पढ़ता था वो कुछ तो कर रहा है. इस तरह से अगर वो करने लगेगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट इम्प्रूवमेंट आएगा ना. यस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ shrieked. We elves never need that. And then when it was the time of doing maths homework, then what that elf said, जब मैथ्स का वो टाइम आता है होमवर्क करने का, तो ये जो एल्फ है ना, मतलब लिटिल मैन है ना, वो जोर से चिल्लाता है, बोलता है ना, ये क्या है, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं. वो क्या बोलता है, ये टाइम टेबल्स क्या होता है, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़. क्योंकि हम जो डॉफ पर्सन, हम जो लिटिल मैन है, हम जो एल्फ हैं, हमने ये सब कभी नहीं हमें ज़रूरत पड़ी है. जैसे हमें, इसलिए हमें ये चीज़ नहीं आती. वी डोंट नो ऑल दिस थिंग्स. अब तो इट वॉज बैड लक ना, इट वॉज बैड लक फॉर द पैट्रिक. ऑब्वियसली इट वॉज बैड लक. अब बेचारा बताओ, अब इसको नहीं आता, क्या करवाएगा ये. हर चीज़ में से प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज़ में से हेल्प करनी पड़ रही है. अब मैथ्स का इसे आ नहीं रही है, तो अब मैथ्स का ये सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तब किसे करना पड़ेगा, पैट्रिक को ही करना पड़ेगा. राइट. सी हियर पैट्रिक इज़ देयर एंड देयर इज़ अ लिटिल मैन. सोचो कितना छोटू सा है ये, इस बुक पर बैठने के बावजूद भी छोटू सा लग रहा है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज and the next paragraph. And addition and subtraction and division and fractions, sorry, this is the same paragraph, okay, of the previous page. And addition and subtraction and division and fractions, here sat down beside me, you simply must guide me, else know nothing of human history, to them it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. When it was about the addition and subtraction in maths, it was already obviously the maths homework, so there must be addition and subtraction and division and fractions, no? Okay. Then when he started doing all these things, then what he said that, he said to the Patrick that you also sit here and just guide me, okay? Because we is don't know about the mathematics, we don't know about the human history, okay. And so the little elf, already shorter, just got louder. And then what happened, what he said, go to the library, I need books. उसने कहा पैट्रिक को, लाइब्रेरी जाओ और बुक्स पढ़ो, और बुक्स में पढ़ो, तुम पढ़ो, आई विल नॉट रीड. दैट लिटिल मैन इज सेइंग दैट आई वॉन्ट रीड, यू हैव टू रीड दोज बुक्स. तुम बुक्स पढ़ो और उसके बाद मुझे हेल्प करो. अब इसी बहाने पैट्रिक पढ़ाई तो करेगा ना, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था. सोचो उसको बुक पढ़नी पड़ रही है उसको हेल्प करने के लिए. तो सोचो, आप सोच सकते हो ये जो छोटू सा आदमी है वो क्या करवा रहा है, उसे इनडायरेक्टली उसे पढ़वा दे रहा है ना, पढ़ाई करवाना शुरू कर रहा है. राइट, या. और वो उससे क्या बोलता है, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू.
और इस तरह से मुझे तुम हेल्प करो, उस बुक्स को पढ़ो और मुझे हेल्प करो, मतलब वो खुद भी सीखेगा और उस लिटिल मैन को भी सिखाएगा पैट्रिक. फाइन. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Okay, before going to the next paragraph, look at those words, meaning of these words. Nag, one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. Nag means what? ऐसे लोग जो क्या करते हैं, आपको बार बार परेशान करे, क्या करके, कभी कंप्लेन करे, कभी आपसे कुछ पूछे, कभी कुछ करने को बोले, then that will be called a nag. Then again there is a word drag, an informal word, something dull and uninteresting. Drag means मतलब कहते हैं ना बोरिंग सा चीज़. ओके, इट मीन्स दैट स्लाइटली सिक्रेटिवली, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिसे आप रिवील नहीं करना चाहते हो, अपने उसे प्राइवेट रखना चाहते हो, दैट इज़ योर स्लाइटली. ओके, वेयर वी वर, या वी वर इन द पैराग्राफ नंबर 7 ना. हाँ. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. See what happened? And this little man had become nag for Patrick. Means he had, because he was disturbing Patrick. Na, he was again and again he was again and again complaining to the Patrick, and he was again and again asking something to do something फ्रॉम द पैट्रिक. वो बार बार पैट्रिक के पास जाता, कुछ पूछता, फिर क्या करता, कंप्लेन करता, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, तुम मुझे हेल्प करो, बार बार पूछता ये क्या है. तो आप इससे क्या होगे, परेशान हो जाओगे ना. और जो ऐसा करता है वो क्या कहलाता है, नैग कहलाता है. सो द वर्ड नैग इज यूज्ड फॉर होम, फॉर द लिटिल मैन. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि नैग किसके लिए यूज़ किया गया है. देन योर आंसर विल बी फॉर द लिटिल मैन. ओके, and in this way Patrick had to work harder than ever. मतलब पहले से ज़्यादा उसे मेहनत करनी पड़ रही थी पैट्रिक को. ओके, एंड पैट्रिक स्टार्टेड स्टडिंग एट नाइट, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी. और इस तरह से वो, इससे पहले वो कभी पढ़ाई नहीं किया था पैट्रिक ने, लेकिन लिटिल मैन को हेल्प करने के लिए उसे पढ़ना पड़ रहा था. अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो उसको लग रहा था कि वो मेरा काम कर रहा है, बट इनडायरेक्टली उसे करना पड़ रहा था ज़्यादा काम. ओके, और इन दिस वे ही वॉज स्टडिंग. ओके, एंड देन जब और देर रात तक पढ़ाई करोगे तो आप क्या होगी, सुबह आपकी नींद लेट से खुलेगी, आपकी जो आंखें वो कैसे रहेगी, पफी रहेगी, पफनेस रहती है आपकी आंखों में. एंड इन दिस वे व्हाट ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क बाय हिज ओन. वो खुद से ही अपनी होमवर्क कर रहा था और उसे लग रहा था मैं उससे छोटू से आदमी से करवा रहा हूँ. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. और जब 35 days complete होते हैं, when it was the last day of that school, okay, of the school, then what happened? जो little man है, he just went from his home, okay, he went from Patrick's home, okay, and without saying anything, without informing him, मतलब उसे बिना बताए वो चला जाता है. Fine. And there was no one to do homework anymore. And that little man went very quietly and slyly. और वो पीछे के दरवाजे से from the back door he went away. Okay. Now in the next paragraph, that is the paragraph number 8. Patrick got his A. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And at the last, what happened? There was a miracle. And what was that? Patrick got A. Yes, he got the grade A. And अगर जो बच्चे का आप हमेशा रिजल्ट देख रहे हो ख़राब आ रहा है, अचानक से आप देखोगे he has improved his result, then what will happen? Obviously you will be surprised. In this way all the classmates were surprised, they were amazed, and his teachers smiled. उसके टीचर्स बड़ा खुश हो गए, स्माइल कर रहे थे, कह रहे वाह शुक्र है he had started his studying, and were full of praise, and they were praising also to Patrick. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. और उसके पेरेंट्स बड़ा ही सरप्राइज थे, वो लोग भी, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया पैट्रिक को भाई. He was now the model kid, cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. और इस तरह से he had become a model kid. It means
Model kid means what? The kid from whom anyone can be influenced, can learn something. वो ऐसा हो रखा था जिससे लोग सीख रहे थे कि देखो, अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको पढ़ने में वीक हो तो आप बाद में नहीं पढ़ सकते हो। बच्चों, दिस लेसन इज़ फॉर यू ऑल आल्सो, ओके। आप लोगों के लिए भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई चीज़ नहीं आ रहा आपको, तो ये नहीं कि आपको कभी नहीं आएगा। इफ़ यू ट्राई हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, देन यू विल लर्न इट। डोंट वरी, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप अगर करना चाहोगे देन यू कैन डू इट। इसलिए आप कोई भी काम ये नहीं समझो कि मुझसे नहीं होगा। जैसे पैट्रिक ने कहा था ना कि मुझसे ये नहीं हो सकता होमवर्क करना, पढ़ाई करना, बट उसने किया तो, चाहे किसी तरीके से किया हो, इनडायरेक्टली किया हो, डायरेक्टली किया हो, बट किया उसी ने ना। एंड ही गॉट द ए रैंक, ए ग्रेड। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। In through this chapter, the author wants to give you lesson that you can, nothing is impossible in this world and you can do it. So बच्चे, just work hard and try to do it. आपके अंदर ना सीखने का एक जज्बा होना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। अगर आप पहले ही गिव अप कर दोगे देन यू विल नेवर लर्न। सो जस्ट लर्न फ्रॉम दिस पैट्रिक, okay. Huh. Then he had become a model kid and he used to do all the work, okay. He started doing all the works. He started cleaning his room also. पहले वो नहीं करता था लेकिन अब करने लगा उसने. It means he was totally changed. Fine, okay. His behavior was also changed. Now coming to the next next paragraph, you see in the end Patrick still thought he had made that tiny man to do all his homework, but I will share a secret. Just between you and me, it was not the elf. Patrick had done it himself. Here, the author, or you can say writer, whose name is Carol Moore, he's saying that what he is saying that he is concluding in the last paragraph that जो Patrick है ना, he was still thinking that he has not done anything. It means Patrick was thinking that he has not done anything. It is all, these all are done by the little man. उसे लग रहा था ये सारा little man का किया हुआ है, जो मैंने ए रैंक लाया, जो भी ए ग्रेड लाया, ये मेरा खुद का नहीं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लिटिल मैन, उसके कारण ये आया है। उसे ये ऐसा फील हो रहा था। बट हेयर द राइटर वांट टू टेल यू दैट इट इज़ अ सीक्रेट। ही इज सेइंग दैट इट इज़ अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। मतलब राइटर आपको ये बताना चाह रहे, कैरोल मूर ये आपको बताना चाह रहे दैट इट वॉज नॉट द एल्फ, इट वॉज नॉट दैट लिटिल मैन, इट वॉज हु, it was Patrick. Yes, he had done it himself. Fine, okay. So children, we have done this chapter number 1. We have done the explanation of this chapter. Now in the next part, it means in the next video, okay, I will discuss these exercises, question answer and everything. All right. So children, if you have enjoyed this chapter, if you have understood this chapter very well, if you have liked the way of my teaching, then there is a request from you all that do subscribe my channel, hit the like button and share it to others. It means आप अपने दोस्तों को share करो. Fine, okay. And show your love also by doing all this. Fine, okay. So have a good day. Bye bye. Take care.